Most welcome to my online class ARM Education. My name is Akhiras Masahari, a teacher of Dorongri High Secondary School. Boykhoubo Poraibai Angni online class. Today I am going to discuss a topic from class 10 English textbook, First Flight. The name of the topic is Kirk, written by Lokis Abrol. Kirk is coffee country famous for its rainforest and spices. Kirkखौ कफिनि हादर होननानै मिथिनाय जायो आरो बियो अखा गोलैनाय अरनबारि आरो मस्लाफोरनि थाखाय मुंदांखा। दायो नोंसोर बयबो बिजाबखौ बेखेवनानै ला। आं इंलिश रिडिंखौबो होलांगोन। लोगो खेबसेयावनो बर' ट्रान्सलेशनखौबो आं नोंसोरनो खिन्थालांगोन। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a pitch of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. तो बिनि बर' ओंथिया जाहैबाय एरैबायदि माइसोर आरो बोरिमा नोगोर मेंगलरनि गेजेराव गसाइनि रायजोनिफ्राय थोख्रासे सोरगो दोरोदना फैनानै बेवहाय सफैदों। बे गोजौ गाहाय हाजोजों बुंफबनाय हादामा बाख्नायजाथाव दावहारु हारिनि सुबुंफोर, समायना आइजोफोर, हाग्रानि जिउसाफोरनि आंगोनि थावनि। Kirk or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices, and coffee plantations. Evergreen rainforest cover 30% of this district. Kirk एबा Kodaguआ कर्नाटकनि उन्दैसिन जिल्ला, जायखौ अराय सोमखोर अखा गोलैनाय अरनबारि, मस्लाफोर आरो कफि बिफां बारिनि नखर होननानै मिथियो। अराय सोमखोर अखा गोलैनाय अरनबारिया जिल्लानि 30% आवग्रिनानै दङ। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopy in prime corner. मनसुननि थामहिनबा बारदै सिख्ला फैनायनि समाव बेवहाय गोबां अखा हायोखायनो नायगिदिंग्राफ्रा खम थाङो। बेवहाय रंजाथाव बोथोरा सेप्तेम्बर दाननिफ्राय मार्च दानसिम सोलिबाय थायो। बे समाव बोथोरा खम अखा गोलैनायजों मोजांद्राय जायो। बेवहाय हां बोनायाव कफिनि मोदोमनायजों गोहो मोनो। फैलाव कफि बागाना आरो बेंगिरिफोरनि न'माफोरा उखुम महरनि साया बिफांनि सिङाव नुफा माफा साबजाथाव थावनियाव थायो। माने बेयाव खाना लायो आरो
The fiercely independent people of Kirk are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. Thus people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waistbelt worn by the Gadafus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. बेवहाय बुंदों थिउरिया अराय उदां कुर्गनि मानसिफोरा जानो हागौ ग्रीक नङाब्ला आरबिक हारिनि उनजोलै। मोनसे सल'आ बुङो आलेकजेन्डारनि सान्थ्रि हान्जानि मोनसे बाहागो सान्थ्रिफोरा खोलाथिं बोरिमा ओनसोलाव बेरायहैदोंमोन आरो जेब्ला बिसोर गिदिंबोफिनदोंमोन मावनो हाथावै बादि बेवहाय अरायथा थानो लादोंमोन। बै मानसिफ्रा जायगानि थागिबि आइजोफोरखौ जुलि लालायदोंमोन आरो बिसोरनि हारिमुआ दोरोङारि दावहा नांग्रा हारिनि हाबा आरो धोरोम फालिनाय नेमफोरा रोखायै हिन्दु धोरोमफोरा फालिनाय बादिनो। आरबनिफ्राय उजिनाय सान्थुआ जाबाय कदाफुसफोरा गोलाव गोसोम कटजों जानजियाव आगर एरनाय बेल गाननाय जायखौ कुफिया होननाय जायो। बियो आरब आरो कुर्सनि मानसिफ्रा गाननाय कुफियाजों गोरोबो। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kadavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. बेवहाय बुंदों कुर्गिफोरनि नखराव सिबिलायनाया माने सोंनाय हनाया आरो दोरोङारियै दङ आरो बिसोरनि फिसाज्लाफोर आरो बिफाफोरनि साहसजों सोमोन्दो थानाय गोबां गोसोखां सल'फोर दं। भारतनि सान्थ्रि हान्जानि कुर्गि रेजिमेन्टआ मोनसे बांसिनद्राय साहसारि बान्था मोनगिरि रेजिमेन्ट आरो भारतनि सान्थ्रि हान्जानि गिबि गाहाय जेनेरेल कारियप्पाया सासे कुर्गिमोन। दाबो भारतारि मानसिफोरनि गेजेराव कदाफुसफोराल' लाइसेन्स गैयालासेनो सिलाइ बाहायनो हायो। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their cages, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. कावेरी दैमानि दैया कुर्गनि अरनबारि आरो हाजोनिफ्रायनो बोहैबोनाय महासिर मुंनि जाथोसे गिदिर गोजों दैनि नाखौ बिनि दैफोराव थोजासे मोनो। ना लांखारा
थामहिनबा मासेलेंखाया ना हमनो थब्लयो जेराव मान्दाबफोरा आरो लांगोर मुख्राफोरा गावसोर आद्रा जानाय फिथाइखौ गोजों दैयाव गारहरनानै दै थरथिंनि बारज्ल'नाय आरो गोग्गो दैनि फिसा बोहैथि उन्दै दोहौ जाखांनायखौ नायनानै रंजायो। मैदेरफोरा बिसोरनि माहुतनि हेफाजाबजों दैमायाव दुगैनानै आरो उन्दै हाग्राजों बुस्राबनानै रंजायो। The most laid-back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. गोबां गोजोनग्लायनो नागिरनाय मानसिफोरनि थाखायबो जोबोर बोलोनि गोनां खैफोद जाथाव गेलेग्राफोर जेरै दैमाजों बोहैग्लांनाय थामहिनबा रिभार राफ्टिं, नावजों खारनाय, केनियिं, दिरुंजों गाहायाव ओंखारबोनाय रेपलिं, हाजो गाखोनाय, रक क्लाइम्बिं आरो हाजोआव मटर साइकेल सालायनाय थामहिनबा माउन्टेन बाइकिं बायदि गेलेग्राफोरनिबो बेवहाय खाबु दं। बे ओनसोलनि गोबां थाबायग्रा लामाफोरा थाबायग्राफोरजों अनसायजानाय बेवहाय वाकिं ट्रेल्स दं होननानै बुंदों। Birds, bees and butterflies are there to keep a company. Macaws, Malabar squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. बेवहाय नोंजों लोगो जानो दाउफोर, बेरेफोर आरो सिख्रिफोर दङ। माकास, मालाबार मान्दाबफोर, लांगोर मोख्राफोर आरो स्लेन्डार लरिसफोरा दंफां आन्दोनिफ्राय नागिरगोन नोंखौ बेयाव थांब्ला। जायखिजाया मानो हाग्रानि मैदेरफोरनिफ्राय एसे गोजानजों थांनायखौ आं नागिरो। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire vast landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargandama, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppi is a bonus. The monks in red, ochre, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. ब्रह्मगिरि हाजो गाखोब्ला कुर्गनि आबुं खुवाजों खोबनाय हा नुथायखौ नों गुवार नुथाय महराव नुनो मोनगोन। दोरोंनि दालां मोनसेखौ थाबायनानै बारब्लानो 64 एकर हानि निसर्गधाम दिपखौ मोनगोन। बेयाव थांब्ला बायलाकुपनि सेराव भारतनि बांसिन तिब्बतियान सुबुंनि थागिबि थावनि जेराव बुद्धिस्ट साधुफोर दं बेखौबो नुबावगोन। नैबे कुर्गआवनो बुद्धिस्ट साधुफ्रा गोजा, गेरुवा आरो गोमो गाबनि सिफोरजों ग्लाउसि रब्स ग्लाउसि गोबां गोमोथावनि गेजेराव थायो जाय नायग्राफोरखौ भारतनि गोसो गोरबोखौ नागिरनायजों संनानै दिहुननो नेनानै दं। बियोमोन कुर्ग आयदानि सायाव आंनि मोनसे भिडिअ। आं मिनिंफोरखौ गोसा गोसा सोदोबनि मिनिंफोरखौ नोंसोरनाव स्क्रिनाव डिसप्ले खालामखादों। नोंसोरो जाहाथे बेनि मिनिंफोरखौ
नायनायजों लोगोसे आरोबाव माबाफोर थायोब्ला डिक्शनारि नायनानै बिनि ओंथिफोरखौ दिहुननानै ला। That's all. बेखिनियानो बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ बावबाय। Thank you.